Assalamu alaikum grade 5 students. So let's review our yesterday task, and it was about giving the answers of questions. So today we have the same task. Today again we have a few questions and you have to answer them. So are you ready for today's activity? Okay, fine. So answer the following questions. Describe how biotic factor of an ecosystem is affected by its abiotic factors. Support your answer with an example. आपको डिस्क्राइब करना है बायोटिक फैक्टर कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है एबायोटिक फैक्टर के साथ. आपने इसको स्पोर्ट में एक आंसर करना है और उसको एग्जाम्पल के साथ आपने इस आंसर को जो है वो बताना है. ठीक है जी. सो एज यू नो दैट बायोटिक फैक्टर जो है वो लिविंग थिंग्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स वो हैं जो नॉन लिविंग नहीं हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Abiotic factors are those non-living factors which affect the ability of organisms to survive and reproduce. For example, water, soil, air, and sunlight. Biotic are all the living things that affect an organism in its environment. For example, birds, plants, microorganisms, and some more. Abiotic factors restrict the growth of population, determine the type and number of organisms able to exist within an environment. Biotic factors are living things that interact with other organisms, even sometimes parasites, diseases, and predators. Plants use water, sunlight, carbon dioxide to their nourishment. Plants are few, water is less, and soil is not good. Then all these affect the ecosystem. Temperature, climate, and extreme weather affects the biotic factors. Due to climate conditions, heat, temperature rise, animals die, and some migrate to other lands for good shelter. Birds from Arctic land migrate to warmer places and afterward return home in a warm climate. So, in an ecosystem, both biotic as well abiotic factors are interlinked with each other. Both affect each other in an ecosystem. So it's a long answer because you have to give an example to support your answer, so you have to understand it again. You listen this answer again. So okay, so what is the next question? And the next question is about explain the importance of study of इकोलॉजी. हमें इकोलॉजी जो है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत के बारे में एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ecology. Okay, so the answer is the importance of the study of ecology helps us to develop systems that manage to conserve important habitats, insects, birds, and ensures the survival of a variety of wildlife. Ecology provides the essential basis for nature conservation. To conserve the marine communities, we must have the understanding of living resources in that particular ecology. For example, mangrove forest is a source of medicines, firewood, and other timber for the local population. Mangrove forest is a multi-purpose complex ecosystem, so it needs to be managed using methods to conserve and keep the balance in the preservation and safeguard. So governments and citizens should be aware of the methods to conserve living resources in ecosystem. It helps us to control and understand better human activity in the environment. We can have knowledge of the natural world
environment and people living it. So you know, this world is so beautiful. ये जितने भी इकोसिस्टम हैं हमें इनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है. सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज़ योर होम असाइनमेंट टुडे. सो आई हैव आस्क्ड यू 2 क्वेश्चंस और उसमें आपने डिटेल आंसर दिए. तो अभी आप क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिकॉर्ड करोगे एंड इट विल बी अ वीडियो रिकॉर्डिंग. ओके फाइन. सो चूज़ 1 क्वेश्चन और उसकी आपने आंसर करना है और उसको वीडियो में आपने आंसर करना है. देन यू हैव टू सबमिट दिस वीडियो टू योर टीचर. एक काम आप और करेंगे और आप ये करेंगे कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है यू हैव टू सर्च ऑन इंटरनेट और उसकी तस्वीर लेकर और उसके बारे में 2 या 3 लाइंस लिखकर यू हैव टू सबमिट टू योर टीचर. सो दिस इज़ योर टुडेज असाइनमेंट एंड आई होप दैट यू आर सबमिटिंग योर previous assignments as well. Okay, so take care.